Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome you all once again from Ghani Memorial Cricket Stadium, Rajori Kadal, Srinagar. Live, we are on the platform of ANN News Channel. And let's talk about the score, the target that's to be chased down by MLA Gymkhana. It's a massive one. It's surely a massive one. 238 is the score that's to be chased down by the likes of MLA Gymkhana. And out walk the two openers, Mr. Tajamal Baba, the captain, and Basharat, that's Boy Amir. And Bilal Ghazi from the far end is going to operate, and it's not Ishtaq Rasool today operating. Fast ball, bang he goes, oh, and the ball hits the side screen straight away, and Tajamal Baba is not going to take his time, and he just starts to settle on the very first ball, straight as a die. And that's a wonderful start, Irfan. And welcome to the box as well. बड़ा जोरदार और शानदार शॉट, शुक्रिया बाबा निसार साहब। और इस अंदाज का आगाज होगा एमएलए जिमखाना बडगाम की जानिब से। यकीनन इस बात की तवक्को नहीं थी, और इस तरह से तजमुल बाबा ने अपने रिवायती अंदाज में अपना खाता खोला। इस ओवर की दूसरी गेंद बाबा के लिए, और इंतजार करते हुए खेलने की कोशिश, लेकिन एन वक्त पर आखिरी लम्हे पर उन्होंने गेंद के लाइन से बल्ले को जरा सा हटाया, और इस तरह से रन कोई नहीं आया। ताहम यहाँ आगाज में ही अगर देखें तो लगभग 12 की औसत से रन्स बनाने हैं। 238 का हदफ, 238 का टारगेट जो मिला है वो चेज करना है टीम एमएलए जिमखाना बडगाम को। अगली गेंद इस ओवर की पैड लाइन पर, और ऐसे में ग्लांस करने की कोशिश की थी वहाँ बल्लेबाज तजमुल बाबा ने, लेकिन इस तरह से वहाँ डॉट गेंद, और बोईमीर दूसरे एंड पर है और काफ़ी अरसे से ओपन करते आ रहे हैं यहाँ एमए जिमखाना बडगाम के लिए। अगर बात करें तजमुल बाबा और बोईमीर के लिहाज से, तो काफ़ी ओपनिंग पार्टनरशिप्स, काफ़ी फतूहात से उन्होंने हमकिनार किया है टीम एमएलए जिमखाना बडगाम को। और आज एमएलए जिमखाना बडगाम ने उन्हें इसी तवक्को के साथ ओपनिंग के तौर पर, सलामी बल्लेबाजों की जोड़ी के तौर पर यहाँ बल्लेबाजी करने के लिए भेजा है। और मुझे लगता है कि अगर ये दो बल्लेबाज आज खरे उतरे एमएलए जिमखाना बडगाम की उम्मीदों पर, तो 238 का जो हदफ है यकीनन चेज कर सकती है एमएलए जिमखाना बडगाम। Indeed, and we've got a good news as far. Sarfaraz Khan, a great player of India, has got married. Next ball, slower one, and that just goes straight arm it at the mid-on, not for runs. A good comeback for Bilal Ghazi. And if we talk about one of the wonderful cricketers as far as Kulgam is concerned, trademark wicketkeeper batsman Imran Zargar is also tying his knots today. And that's the news. I believe it was to be forwarded to all the cricket fans. Next ball from Ghazi. And straight as a die once again to the left of that mid-on fielder. He just could see this ball just travelling all the fans for 4 runs. And Tajamal Baba's intentions are looking quite clear and cool. He knows that we're chasing a massive score of 238. It's only to be completed and chased by having some magical knock straight away. And a good start. 10 without loss, 5 balls bowled. And Tajamal Baba, such a tall cricketer, and especially is known for those pull strokes. We'll have to wait whether he pulls anyone today. Slips in place, short third man. We find a deep point, short cover, a mid-off in the form of Ishtaq Rasool. In goes Ghazi. Ball down, missing the line completely, and Tajamal Baba has to depart. I was telling you, he's not gonna play pretty sensible and soft cricket. He's surely gonna go all over the bowler. Finally missing the line completely, and Bilal Ghazi getting better of him, Irfan. And he was hitting boundary and sixes, and now it's all late for him to go on. And finally Gymkhana losing the first wicket. It's 10 for 1, first over done. जी, जिस तरह से मैंने पहले कहा कि तजमुल बाबा और बोईमीर, हालांकि काफ़ी दफ़ा उन्होंने
मुतअद्दिद फतूहात से अपनी टीम को हमकिनार किया है, लेकिन यहाँ जब सिचुएशन डिमांड करती हो 12 रन फी ओवर, और तजुमुल बाबा ने हालांकि 10 रन बनाए थे, और मुझे लगता है कि इस ओवर में आगाज से पहले इतने ज़्यादा रिस्की स्ट्रोक्स खेलने की ज़रूरत थी, वो भी तब जब आपने 10 रन पहले ही बनाए हो। ये देखे लेग स्टंप को बिल्कुल ज़मीन से बाहर निकाल दिया, और यहाँ मैं समझता हूँ कि तजुमुल बाबा ने एक गैर जिम्मेदाराना स्ट्रोक खेलकर अपनी विकेट गंवाई, क्योंकि वो जानते थे पहले 10 रन आए इस ओवर में, और अब उन्हें इस आखिरी गेंद पर या तो डिफेंसिव अंदाज से खेलना था या तो एक सिंगल हासिल करके स्ट्राइक वापस अपने पास रखनी थी अगले ओवर में। लेकिन यहां आप चाहे तजुमुल बाबा को लाए या विराट कोहली को लाए, दबाव रहेगा, दबाव जरूर रहेगा, क्योंकि 238 रनों का हदफ ताकुब करना है, चेज करना है, वो भी इस बड़े डायमेंशन वाले ग्राउंड पर। और ऐसे में अगरचे यहां एक आध विकेटें और आती हैं टीम साहिल इलेक्ट्रॉनिक्स के हक में, तो मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल होगा यहाँ चेज के नजदीक भी पहुंचना टीम एमएलए जिमखाना बडगाम को। Indeed, I will agree with you. Just a wicket, one more over here, and I find it quite difficult for MLA Gymkhana to reach this kind of a score. And we find quite unusual bowling starting over there. Find no Ishtiaq Rasool. I believe the ball has been given to Yunus Jablipora, and you believe it's quite strange. Ishtiaq Rasool not bowling, not operating. Even though you find the second bowler that's being introduced, we find still not Ishtiaq Rasool. So quite unusual. Plans today as far as SAAHIL Electronic Shopian concerned. वेल इस फैसले के पीछे अगर देखा जाए तो ये सोच भी हो सकती है कप्तान की कि अगर तजुमुल बाबा और बोईमीर यहाँ टिकते, या बोईमीर अभी भी विकेट्स पर हैं ही, हालांकि वो पहली गेंद का अब सामना करने जा रहे हैं, तो इश्तियाक रसूल की अगर बात करें तो वो एक मीडियम पेसर गेंदबाज है, काफ़ी कम रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं। ऐसे में यहाँ कप्तान को शायद यही लगा कि उन्हें अगर फिलहाल गेंदबाज से दूर ही रखा जाए तो बेहतर रहेगा, लेकिन ये फैसला मुझे लगता है अब तक बहुत ही अच्छा साबित होता है। यूनुस जबलीपुर आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, पहले गेंद ओवर पेश, गेंद को उठा दिया, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से जोरदार छक्का, बोईमीर ने उसी तरह से खाता खोला जिस तरह से तजुमुल बाबा ने। Indeed, copy of the shot of Tajamul Baba, and guess what? The ball has gone in the graveyard of downtown Rajouri Kadal, Srinagar. It's difficult to find the ball back again, but let's talk about Boimir. That was a superb shot, great shot, and Yunus Jablipora is welcomed by Boimir with that massive shot. Straight it goes and into the graveyard of Rajouri Kadal, Srinagar. So score 16-1. Let's see how Yunus Jablipora now comes back. Right arm over. Short of length once again. It was rather, yes, a signal comes a bit late, but it's wide. Indeed, a good decision by the umpire, and it was going over the head of Boimir, so definitely it's called as a wide. And talking about the score they're chasing, it is a mountain-like score, 238. And if you want to chase this down, somebody has to chip in with some magical runs. This time, moving in the crease and just hitting the ball. And the ball has departed out there to the deep, long leg region. Second six from the blade of Boimir. And Yunus Jablipora will surely have to come back stronger with his lengths in line. Alexa Boimir is such a strong character, is such a well-led batsman. He will just counter him, knowing that we can't afford to have these kinds of door deliveries more often. Only the way that is left for them is to counter, even though they lose the wickets on one side as well. बात करें यहाँ, हालांकि बोईमीर जो कि एक आला कैलिबर के खिलाड़ी हैं और पिछले 2-2.5 साल से जिस फॉर्म में वो चल रहे हैं, यकीनन मैं समझता हूं काबिल तारीफ और काबिल एतमाद। अगली गेंद बोईमीर के लिए और दवा शॉट कवर की जानिब, गेंद के पीछे फील्डर, लेकिन रोकना नामुमकिन, बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। This is a great batting from Boimir. I believe the way he is playing is having a role to play. But let's talk about his, idea now. Whether he changes his mind, he switches batting now. Will he go for the defensive approach, try to believe in ones and twos? That's a mistake that was done by the likes of Tajamul Bapa. Starting off with a 6 in the boundaries, then now, he was trying to go on with the same momentum. Boimir starting off in the same fashion.
But let's see whether he changes his mind or going with the same. Next one, that has been pulled. That has gone all the way down to the deep mid-wicket region. And Yunus Jablipora is getting a punishment of his life. 3 sixes and a boundary. And I believe just 24 of 4 balls. You can't expect it from Yunus Jablipora. Credit Boimir for you. 2 sixes, rather 3 sixes and a boundary. And what an over this is turning out to be. And I tell you, Tajummul Baba and his team, that is MLA Gymkhana, still in the hunt. Baba gone, but still Boimir is on the craze. Just watch this over. 24 runs have come off this over and still counting. 2 balls to go. Will we see Yunus Jablipora coming back stronger? Rather 3 balls to go. Next one, good ball. Just playing it down to the mid-wicket region. The ball is running away down to the fence. The square leg fielder comes in to stop the ball. He does, and eventually Boimir gets a double. It's 36, and the run rate at the moment, just look at the run rates, around 22 at the moment, Irfan. And the way Boimir has started off his fashion cricket, I believe this is surely going to be the knock of his life if he still goes on and gives the proper finish to the likes of MLA Gymkhana Budgam. In goes Yunus. Shot again. This time this is in there. Will it be caught? Oh! Catch is dropped and the ball just topples over the fence for 4 runs. It's a no ball once again. Second no ball of the over. 5 runs counted and see 31 of the 4 balls. And Yunus Jablipora is out of his mind at the moment. Can you believe it? The bowler of the caliber of Yunus Jablipora being countered by Boimir. 31 runs of just 4 balls. I believe a record is in making. A record is in making. Will we see more than 36 runs being scored in this very over? And no ball counting 5. Believe it, Yunus Jablipora. 31 runs is considered of only 4 balls. In he goes in. Oh! That has gone a miles again. That has gone into the residential area of Rajouri Kadal, Srinagar. 6 number 5. And courtesy is all Boimir. My goodness, that's a real thrash, a real smash, and a real brutal innings as far as Boimir is concerned. 47 for 1. And 1 ball yet to go. And let's talk about Yunus Jablipora. 37 runs he conceded, only 5 balls he has bowled. And the way Boimir is playing, that is martial. That is martial knock from this man. And the ball is still being retrieved, Irfan. You are dumbfounded. You do not speak any word about Boimir. Just speak something. Well, I am enjoying totally. I am enjoying. और यहाँ अगर देखें तो 37 रन पहले ओवर में यूनुस जबलीपुरा की, और अभी भी 1 गेंद बाकी है उनके ओवर की. तो मुझे लगता है अगर इस गेंद पर भी छक्का आएगा तो यकीनन ये सबसे महंगा तरीन ओवर रहेगा यहाँ किसी भी गेंदबाज के जरिए से. सो यूनुस जबलीपुरा जो कि इस वक्त हालांकि वो मुझे लगता है ये सदमा यकीनन काफ़ी अरसे तक याद रखेंगे. और अगरचे बोईमीर की गेंदबाजी की बात करें तो उन्हें काफ़ी रन्स पड़े थे, लेकिन अब शायद वो उसी चीज़ का बदला ले रहे हैं. और 47 रन बने हैं 1.5 ओवर की गेंदबाजी में. अगर आप मौजूदा रन औसत की बात करें तो लगभग 26 रन की औसत से इस वक्त रन बन रहे हैं. और अब जो आस्किंग रेट है वो 12 की औसत से था, लेकिन अब नीचे आ गया है 10 की औसत, 10.50. Let's talk about Yunus Jablipora. What do you believe and what he should be going through at his mind, talking about the very kind of destruction that has been done to him by Boimir? बोईमीर के खिलाफ गेंदबाजी करना आसान नहीं रहेगा. वो भी तब जब उन्हें पता है कि एक बड़ा टारगेट चेज करना है. सो डेफिनेटली ही विल अटैक. ये अटैक करना उनको जरूरी है. यहाँ पे अब आखिरी गेंद देखेंगे यूनुस जबलीपुरा की, राइट आर्म ओवर द विकेट. एक बार फिर से ऑफ लाइन से बाहर कैच ड्रॉप कर दिया. और जब आप 2 कैचेस ड्रॉप करेंगे यहाँ तो यूनुस जबलीपुरा करे तो करे क्या? Well, it's the owner of SAAHIL Electronic Shopian, that is SAAHIL, who has dropped the catch. And it could have been the dangerous wicket of Boimir walking back to the hut. And unfortunately, SAAHIL, the owner of SAAHIL Electronic Shopian, has dropped a sitter. He has dropped a sitter. And if you drop the catch of Boimir like that, I believe you are going to have the negative side of the coin, Irfan.
वेल इससे पहले जो कैच ड्रॉप हुआ है वो स्क्वायर लेग की पोजीशन पर ड्रॉप हुआ है, और अगर यकीनन वो कैच पकड़ा होता तो बॉयमीर आउट हो गए होते। और इस तरह से जब कैच ड्रॉप होता है गेंदबाज पर यकीनन दबाव आता है, और यहाँ से आप देखेंगे जो साहिल थे गली की पोजीशन पर, उन्होंने भी कैच ड्रॉप कर दिया आखिरी गेंद पर। और अगर यहाँ मैं समझता हूँ एक अच्छा कमबैक किया था यूनुस जबलीपुरा ने, 37 रन पड़े पहली 5 गेंदों पर, और इसके बाद आखिरी गेंद जो है कैच छोड़ दिया गया। बिलाल गासी अब गेंदबाजी करने के लिए आए, सोहेल पॉल के लिए पहली गेंद, पॉल ने गेंद को बैक पर स्टीयर किया थर्ड मैन की जानिब, और मिसफील्ड वहां 2 रन आए। जी हाँ, 200 रन भी मुकम्मल किया, 49 रन बने 2.1 ओवर की गेंदबाजी में। What a start. You know, I feel surely short playing the majesty of the start that has been provided by Boymir. And I just watch his batting. 34 of just 8 balls. He could have been back to the hut, but Sahil dropping his catch. And also before that, we could find Umes Ittu also dropping him on that deep square leg region. Bilal Ghazi into second over. This time appealing for that LBW. Down to the third man. The ball is racing away for 4. That's not a great fielding effort as far as the third man of the slips fielder is concerned. And the runs are leaking, the runs are leaking, and the runs are leaking for MLA Gymkhana at the moment. Guess what? We're only 2.1 over bowled. It's rather 2.2 overs bowled. It's 53 on the board. It's a good start if you're chasing 238 Irfan. मैं समझता हूं अब तक ये 2.2 ओवर की गेंदबाजी में सबसे हाईएस्ट स्कोर हैं जो कि एमएलए जिमखाना ने अपने नाम किया है, और सुहेल पॉल इस वक्त मुकाबला कर रहे हैं बिलाल गासी का। अगली गेंद पॉल के लिए पैड पर टकराई, अपील जोरदार, लेकिन अंपायर बिल्कुल भी खामोश। और ऐसे में देखा जाए तो जो तजम्मुल बाबा की विकेट, we have a referral for the LBW. And it was announced today early in the morning that now we are going to have the referrals, and that I believe Bilal Ghazi was looking quite confident for the same. The decision now looks pending, and TV umpire Tariq Saab has got a role to do. बात करते हैं तजम्मुल बाबा के विकेट की। ये बिल्कुल लेग स्टंप लाइन पर गालिबन गेंद आ रही थी, और ऐसे में अंपायर देखना होगा कि क्या यहाँ इशारा करेंगे। और कुल मिलाकर देखा जाए तो आपको लगता है कि दिस वाज पिचिंग इन लाइन एंड हिटिंग टू स्टंप्स? Well, actually, you know, if we look at him, you know, when you're jumping on his toes, the off stump actually looks quite visible. It means keeping in mind the ball might have missing the leg stump, so the doubt of benefit, if we call it benefit of doubt, that kind of decision might go in favor of the batsman and Sohail Paul over there. But let's wait for TV umpire Tariq Saab what the decision is going to be. So, मुझे तो लगता है कि बॉल जो है लेग स्टंप के लाइन में आ रही है, और विकेट्स को लगभग अगर औकाई देखे तो मे बी stumps missing hogi, maybe, but I'm not sure. Still TV umpire Tariq Saab just watching it from different angles. Still not being satisfied. Decision is still pending. Let's see what comes out the decision from the TV umpire. 53 for 1 and Boymir, what a batting, what a knock. 34 of 8 only, and he has smashed Uni Jablipora in his very first over. 37 runs he did count on to his very first over. Just watched his ball, even though it looks to me it was drifting down a bit. Still taking a long. TV umpire Tariq Saab taking a lot of time to come up with the decision.
And if it goes, it will be SAAHIL Paul walking back. Still the decision is pending. And now it's a time to be having the decision on the board. It's not out. It's not out. So SAAHIL Paul survives. $53 for 1 after 2.3. And talking about the referral, the review. The review has been lost as far as SAAHIL Electronic Shopian is concerned. Next ball. In the gaps to the right of that gully fielder. No chance for the fielder. And the ball in a hurry crosses to the fence for 4 runs. Once again, it's Boimir. Boimir is having a knock off his career. In a knock off his life. I believe he's going to remember this for ages and ages to come. Irfan. बात करेंगे युवराज सिंह की. उन्होंने 12 गेंदों में नसीब सेंचुरी बनाई थी T20 2007 वर्ल्ड कप में. और यहाँ बोइमिर 9 गेंदों पर 38 रन बना चुके हैं. और अगर बात करें रिव्यू के हिसाब से तो SAAHIL इलेक्ट्रॉनिक शोपियन को जो एक रिव्यू उन्हें मुयसर था वो उन्होंने गवा दिया है. और अब वो यहाँ से कोई रिव्यू नहीं ले सकते. अगली गेंद. माय गुडनेस, दैट इज 6. Well, are we having a match or not? We're just going through the highlights of this game. It's looking a great exhibition of batting class from Boimir. Kaswan is about to break the record of great Yuvraj Singh. Is batting on 42 of just 9 balls, rather 44 he might be. In goes Ghazi once again, just cuts the ball and finds the gully. Oh, fumble. And that turns one more run to the likes of Boimir. What a classical knock it's being provided and batted by the likes of Boimir. Is surely going a carnage. Is just producing a carnage of batting over here. And SAAHIL Electronic Shopian can't believe that they are being punished badly. नजरें जो हैं बोइमिर की गेंदों पर, हालांकि चाहे वो तेज़ रफ्तारी से आए या कम रफ्तारी से आए, बहुत ही उम्दा नज़र हैं उनकी गेंद पर, बड़ी ख़तरनाक नज़र हैं. यहाँ ओवर भी तकमील को पहुंचा और स्कोर 63 तीसरे ओवर के बाद. मसाले तो बहुत हैं, पर कश्मीर की कोख से खास चुने मसाले जिनकी ताजगी और स्वाद रहे बरकरार. ऐसे उम्दा मसाले बनाते हैं सिर्फ लज्जत मसाले. आपकी उम्मीदों पर खरा उतरना हर किसी के बस की बात नहीं, इसीलिए जदीद तकनीक से तैयार करदा लज्जत मसाले, जिनमें मिठास से भरा हुआ लज्जत शाही कहवा और लज्जत मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, सौंफ पाउडर, गरम मसाला, मीट मसाला और बिरयानी मसाला आपके पकवान को 4 चांद लगा देते हैं. And finally, it's Boimir. It goes to 49. And believe it, he's going to break the record of Yuvraj Singh. For that, he need to just go for a 6 on the last ball he's going to face. Just watch this ball, pulls it beautifully. And the likes of pace Ishaq Rasul is amazing. In a bowling, it's not going to be problems for Boimir to just go and break this record of Yuvraj Singh. 2007 World Cup against England, it was Yuvraj Singh when he hit 6 sixes on stored board. And I believe Boimir has got a chance of hitting and breaking that record. और इश्तियाक रसूल का जिस अंदाज से इस्तेकबाल किया बोइमिर ने, दैट वाज मैग्निफिसेंट. अगली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, गैप, लेकिन फील्डर मौजूद पीछे. थर्ड मैन की पोजीशन पर 1 रन मिलेगा और 50 रन बोइमिर के इसी के साथ पूरे 12 गेंदों में 50. Absolutely great batting knock as far as Boimir is concerned. 50 of just 12 balls. Can you believe it? Can you just believe it? That is marvelous. And the dugout of MLA Gymkhana Badgam, they are just having a great glory. Look at the dugout. Wraps him on the pad. Loud appeal. Will the finger go off this time or not? Ishaq Rasul can't believe it.
They were appealing for the court period, but unfortunate for them that there is no review left for them. They've already lost that, only one review for the team. And unfortunately, I believe Ishtaq Rasool quite disappointed at that moment. But let's talk about Boy Mir's knock, 50 of 12. Cuts beautifully, standing tall. And this is SAAHIL Paul's power now. And he just brutally cuts it for 4 runs. Oh, that is a great exhibition of batting. You know, Irfan, through my entire career of commentary, I've never witnessed this kind of a brutal smashing. And credit must be given to Paul and Boy Mir. Wow. डेफिनेटली जबरदस्त और इस वक्त बड़ी ही तबाहकुन बल्लेबाजी हो रही हैं, चाहे बॉयमीर की बात करें या सोहेल पॉल की अगली गेंद. That is 6 over extra cover. My goodness, my goodness, my goodness, what are we seeing? That's a real entertainment. And now it's SAAHIL Paul's bat that is surely flying the runs. This time, deep in the crease he goes and just hits it beautifully. Just watch it. Back pretty goes and brings all his power. And the ball goes out extra cover region for yet another 6. For the loss of 1. And now SAAHIL Paul chips into the rhythm. 16 of 6. This time cuts the ball in the gap. In the gap. The boundary is followed over there by the 6 runs. What a shot from SAAHIL Paul. This is surely a great batting by SAAHIL Paul. My goodness, he goes on to 20 of 9. Rather 7 balls only. And now Ishtaq Rasool has been given a punishment. All the 3 frontline bowlers have been given a great batting. Rather great punishment. Who will come to start? And I believe it's really going to be a great test of the temperament as far as SAAHIL electronic Shopian concerned. राइट. सो यहाँ इस ओवर की बात करें तो 21 रन अब तक इश्तियाक रसूल की गेंदबाजी पर पड़े हैं और यकीनन वो इस वक्त बड़ी तशवीशनाक हालत में दिखाई दे रहे हैं. और इस तरह से SAAHIL पॉल की मैं तारीफ करना चाहूंगा. बड़ी ही जबरदस्त इनिंग्स अब तक उनकी और इस तरह से यहाँ 84 रन अब तक बने हैं मजमूई तौर. और कुल मिलाकर देखा जाए तो इस वक्त रन बन नहीं रहे बल्कि रन बरस रहे हैं. और ऐसे में SAAHIL इलेक्ट्रॉनिक शोपियान एक तशवीशनाक हालत में इस वक्त नजर आ रही हैं और यकीनन उनके चेहरों पर यहां उदासी की झलकें, उदासी के मनाजिर देखने को मिल रहे हैं. दोनों सेट होकर अब बल्लेबाजी कर रहे हैं और मुझे लगता है कि एंजॉय कर रहे हैं बल्लेबाजी को. It's raining boundaries. Next ball, waiting for the ball, and there is no fielder out there at the final region, and the ball just goes over the line for 4 runs. That's a masterclass batting by these 2 batters, Boy Mir and SAAHIL Paul. Now let's wait and see the confidence. Just going and just making the ball reach closer and giving it a delicate touchdown to the final region for 4 runs. And Boy Mir does the job, and now it's all SAAHIL Paul who is having a song. It's raining boundaries and 6s over here. You just agree with the fact it's raining in 6s and boundaries? Yes, definitely it's raining 6s and boundaries. और मुझे लगता है कि हर कोई चीज़ अब जा रही है यहाँ MLA जिमखाना बडगाम के हक में. और जिस अंदाज से यहाँ बोई मीर ने रिदम पकड़ा, यकीनन जब तजमुल बाबा आउट हुए उस चीज़ का बिल्कुल भी यहाँ पर उस चीज़ की फिक्र ना करते हुए, उस चीज़ पर गौर ना करते हुए उन्होंने जिस अंदाज से रिदम पकड़ा, यकीनन SAAHIL पॉल ने भी पार्टी को ज्वाइन किया और SAAHIL पॉल ने भी उस सिचुएशन को कैपिटलाइज किया. और इस तरह से यहाँ अगर देखा जाए तो बड़ी ही शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों और इस वक्त बल्लेबाजी को एंजॉय कर रहे हैं. बड़ा मैदान है, बड़े छक्के और लाजवाब चौके देखने को मिल रहे हैं. और मैं समझता हूं कि अब जो इस वक्त हालत बने हुए हैं टीम SAAHIL इलेक्ट्रॉनिक शोपियान के, अब वो आसपास एक दूसरे को मशवरा तजावीज दे रहे हैं और गेंदबाजी में अब तब्दीली आ रही है. यू बिलीव इट्स अदले का बदला?
डेफिनेटली इट्स अदले का बदला। और जिस तरह से बल्लेबाजी की थी आकिब मैक्सी और शाकिर बारूद ने, उसी चीज का बदला रहे हैं और वही बल्लेबाज बदला रहे हैं जिन पर रन्स पड़े हैं। अभी भी काफी डेफ्थ है बल्लेबाजी में, अभी भी बहुत सारे बैटर्स का आना बाकी हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि यहां से जो काम करना था आगाज में एमएलए जिमखाना को, वो कर चुकी है। That's the best way to take revenge. You know, these bowlers were thrashed off their bowling and now they are slowly come back. Next ball, just onto the thigh, and eventually the ball has been played down to the mid-wicket region and they will go for a single. Let's talk about the three bowlers that have been introduced so far. Bilal Ghazi, even though gone for runs, Yunus Jablipora gone for 37, I believe. And only Ishtaq Rasool bowled only over and has gone for around 24 in that very over. And so far all the front line three bowlers have been taken for runs, and now it's Amir who has been given the ball. Let's see what he does, and he's going to be faced by SAAHIL Paul. Next ball he bowls in, and this ball has been bisected beautifully. Oh, fumble, and the ball topples over the fence for 4 runs. SAAHIL Paul is surely showing his power at the moment, Irfan. यकीनन 94 पर स्कोर पहुंचा है। 3.5 ओवर की गेंदबाजी में 94 रन। आई थिंक मैं किसी ख्वाब में तो इस वक्त नहीं हूं। Well, it's a record, I believe, so far in my entire career. If you talk about international commentary, you talk about commentary doing out here in the Kashmir Valley. I haven't witnessed this kind of the runs over here. Just going at a run rate of 24. It's 94 for the loss of 1. Next ball, just batted beautifully, just tucks it straight to the short point region. Easy pickings for them for going for a single. राइट, सो यहाँ अगर देखा जाए इस वक्त 5वां ओवर जारी है और कुल मिलाकर 4 गेंदें फेंकी जा चुकी हैं और इस तरह से 95 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान पर। 22 की औसत से 23 की औसत से लगभग रन बन रहे हैं। That is brutal. That is brutal. इस मैच गेंद को उठा दिया, शॉट डाउन द ग्राउंड, दैट इज अनदर बाउंड्री। Well, there are smiles all around the dugout of MLA Gymkhana Budgam, and smiles out here in the commentary box as well. And Boemir is not showing any mercy, no mercy at all. Good comeback. This ball was outside the off stump. 5 done. It's 99 for 1 only. वादी कश्मीर के बेहतरीन और 100% खालिस मसाले, लज्जत मसाले, वाकई लज्जत है। Royal concepts mixed. राइट, सो यहाँ अब 6ठे ओवर का आगाज, पावर प्ले का आखिरी ओवर, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पावर प्ले को बिल्कुल भी मद्देनजर नहीं रख रही है, रन्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नो बॉल आई है पहली गेंद 6ठे ओवर की और इस तरह से अगर देखा जाए तो इश्तियाक रसूल जिनका पहला ओवर करीबन मुझे लगता है कि 25 रन पड़े थे उनके पहले ओवर में और अब वो अपना दूसरा ओवर फेंक रहे हैं। अगली गेंद इस ओवर की, ओ बीट कर दिया वहां बोईमीर को और 100 रन पूरे हो गए यहां एमएलए जिमखाना बडगाम के, वो भी 5.1 ओवर की गेंदबाजी में। Well, it's absolutely carnage. You can't get better start than this, even though they lost Tajamul Bama pretty cheaply on just a matter of 10 runs. But these two have surely better. Chipping in there. Who is going to catch it? Who is going to catch it, or is it going to carry all the way? Yes, it goes over the head of the deep point fielder. He was settling and positioning himself upon the edge of the boundary, and finally he could just see the ball sailing over his head. Yet another 6 for Boemir. This is surely raining in sixes and boundaries out here in Ghani Memorial Cricket Stadium's Rajouri Kadal. And I believe and Ghani Memorial Stadium have never witnessed this kind of showering sixes from the blade. Next ball outside the off stump, too close to cut, and it turns out to be a dot ball. राइट, सो यहाँ 6ठे ओवर में 100 रन मुकम्मल हुए हैं और अब आने वाले जो 14 ओवर हैं काफी कम दबाव रहेगा। एंड लुक एट द आस्किंग रेट नाउ बाबा, इट्स जस्ट 8.70।
Courtesy, Boymir and Paul. Next one, tipping and tipping. Tipping one again. And has gone all the way. Another 6 of the video. Wow. Well, Baba, is it Ishtiyaq Rasool bowling or anyone else? Well, I believe Ishtiyaq Rasool is being just smashed all the way. Is being brutally attacked by the likes of Boymir over there. And is going hammering and tongs. And Ishtiyaq Rasool definitely would not love to have the kinds of the hitting power play on his bowling. Just watch this. He has gone for 39 runs courtesy Boymir, and he has been given a sublime punishment. Having such a wonderful and great height, but being of a small size character, but it generates power, it generates muscles, and it generates such kind of hittings. I believe that is brutal from his side, and an unbelievable hitting from Boymir today. He was given a thrash, and now he's just taking the revenge. अब बॉयमीर चूंकि 19 गेंदें खेल चुके हैं और 67 रन उन्होंने बनाए हैं। क्या शानदार पारी उनकी जिंदगी की। और अगली गेंद को ड्राइव किया स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, दो फील्डर्स के दरमियान, गेंद के पीछे फील्डर स्लाइड लगाकर स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड गेंद को रोका साइड स्क्रीन के ठीक सामने, और ऐसे में 2 रन आए खाते में। सो स्कोर पहुंचा है 114 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि यहां इश्तियाक रसूल का ये ओवर अभी भी बाकी है। और इस तरह से अगर देखा जाए तो 238 रनों का हदफ अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहां 150 का हदफ नजर आ रहा है। Indeed, it's looking quite simple for them, as simple as it's looking at the moment. And next ball, a .1, and I believe that's the end of over. So power play completes. 114 for the loss of 1 only. C Royal Concept, Bacha Chowk, Lal Chowk, Srinagar, J&K 190001. आपके शहर में सैमसंग लाया है इजी शॉपिंग के लिए एक एथोराइज स्टोर, जहां पे आप अपने घर के लिए ले सकते हैं अच्छे अप्लायंसेस। सैमसंग स्मार्ट प्लाजा, बेबी बिन, जवाहर नगर, जहां आप टीवी, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, एसी, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, मोबाइल फोन्स या एसेसरीज ले सकते हैं। वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स विद सैमसंग फाइनेंस प्लस फैसिलिटीज, जो आपकी जेब का प्रेशर कम करेगा और आप अपने घर के लिए मनपसंद अप्लायंसेस बिना बजट कॉम्प्रोमाइज कर ले जा सकते हैं। अगर आप करना चाहते हैं बहुत सारी शॉपिंग और लेना चाहते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स, विजिट सैमसंग स्मार्ट प्लाजा, बेबी बिन, जवाहर नगर। कामयाबी बस बैठे रहने से नहीं मिलती, ये मिलती है सही वक्त। रनों का ताकुब हो रहा है इस वक्त। एमएलए जिमखाना बड़गाम पूरे रिदम में नजर आ रहे हैं, और कुल मिलाकर अगर देखा जाए ये बना अंदर इम मैनुअली लेखान बराबर तो में गम कहीं सह गई प्रॉब्लम। वेल कुछ स्कोरिंग एरर, सॉफ्टवेयर एरर यहां पर आ रहा है, जिस वजह से एमएलए जिमखाना बड़गाम की टीम के खिलाड़ी बार बार तशवीश का इजहार कर रहे हैं और तकाजा कर रहे हैं कि स्कोर बोर्ड सही से वाजिया नहीं हो रहा है। और ऐसे मौके पर बाबा साहब, well, we also find a bit helpless over here in the commentary box, and we actually go through the screen that we have got the facility out here, and it looks to us a bit around 114 on the board after the completion of the power play. The play stopped for a while,
Let's see it get started, but it's gonna be a wonderful contest now. And talking about SAAHIL Electronic Shopian, they need wickets and wickets in many of them. साहिल इलेक्ट्रॉनिक शोपियान की टीम को यकीनन विकेट्स की तलाश करनी होगी। यहाँ बड़ा मुकाबला, उनका अहम मुकाबला, और यकीनन इस वक्त उनकी जुबान हलक में होगी क्योंकि ये उनका दूसरा मुकाबला, पहला उन्होंने हारा है। एंड लुक एट द क्राउड नाउ, Crowd coming in numbers as it's the evening time over here. And let me tell you, the runs are coming in numbers as far as MLA Gymkhana Badgam concerned. And what a start to the chase. Boyamir and SAAHIL Paul. Boyamir today created a record of just scoring 50 of just 12 balls. And what a thrashing he just gave to the likes of Jablipura. A bit of a technical error out there. That's why the score is not being displayed on the screens. Technical team surely putting their hard works in to get it restored quickly. And eventually the play stopped for a while. And we find the game over there being a bit of a break. But let's talk about the real carnage. The real carnage as far as Boyamir and SAAHIL Paul concerned. But Boyamir, it just goes marvelous. Real carnage. And the way he hits those sixes, especially the way he targeted Jablipura, that was wonderful. That was surely great to watch. ज्वेलरी तो सब खरीद लेते हैं, लेकिन खास ज्वेलरी खास लोग ही पसंद करते हैं। कारीगरी ऐसी जो मन को छू ले और खिदमत ऐसी जो दिल को छू ले। तो हमें खिदमत करने का मौका दें और तशरीफ लाएं असावीर ज्वेलर्स, कश्मीर का अपना ब्रांड, हरी सिंह हाई स्ट्रीट, श्रीनगर। मुखलिसाना और ताजगी से भरपूर कंवल मसाले, वादी का दर्जे अव्वल और अपना ब्रांड। ये सिर्फ मसालों तक ही महदूद नहीं, बल्कि कंवल आप तक जायकेदार अचार और शाही कहवा भी पहुंचाता है। ग़िज़ाइयत और लताफत से भरपूर कंवल मसाले रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल। हम हैं कंवल मसाले। मसाले तो बहुत हैं, पर कश्मीर की कोख से खास चुने मसाले जिनकी ताजगी और स्वाद रहे बरकरार। ऐसे उम्दा मसाले बनाते हैं सिर्फ लज्जत मसाले। आपकी उम्मीदों पर खरा उतरना हर किसी के बस की बात नहीं, इसीलिए जदीद तकनीक से तैयार करदा लज्जत मसाले, जिनमें मिठास से भरा हुआ लज्जत शाही कहवा और लज्जत मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, सौंफ पाउडर, गरम मसाला, मीट मसाला और बिरयानी मसाला आपके पकवान को 4 चांद लगा देते हैं। वादी कश्मीर के बेहतरीन और 100% खालिस मसाले, लज्जत मसाले, वाकई लज्जत है। रॉयल कॉन्सेप्ट मेक्स यू रॉयल कॉन्सेप्ट बच्चा चौक, लाल चौक, श्रीनगर, J&K 190001। आपके शहर में सैमसंग लाया है इजी शॉपिंग के लिए एक एथोराइज स्टोर, जहां पे आप अपने घर के लिए ले सकते हैं अच्छे अप्लायंसेस। सैमसंग स्मार्ट प्लाजा, बेबी बिन, जवाहर नगर, जहां आप टीवी, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, एसी, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, मोबाइल फोन्स या एसेसरीज ले सकते हैं। वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स विद सैमसंग फाइनेंस प्लस फैसिलिटीज, जो आपकी जेब का प्रेशर कम करेगा और आप अपने घर के लिए मनपसंद अप्लायंसेस बिना बजट कॉम्प्रोमाइज कर ले जा सकते हैं। अगर आप करना चाहते हैं बहुत सारी शॉपिंग और लेना चाहते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स, विजिट सैमसंग स्मार्ट प्लाजा, बेबी बिन, जवाहर नगर। कामयाबी बस बैठे रहने से नहीं मिलती, ये मिलती है सही वक्त के सही फैसलों से। आपके फैसलों को कामयाबी के पहिए देने आ चुकी है टाटा की नई डीलरशिप।
Kashmir Valley Motor Pvt Ltd, authorized dealers for Tata Motors, showroom and workshop at National Highway Lasjan Bypass, Srinagar. Call 9596777133. CLC कोचिंग सेंटर, एयरपोर्ट रोड, परेपुरा। वादी में पहली बार 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के साथ साथ नीट, जेई और IIT के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी। अब वादी के तलबा भी कोटा, राजस्थान के तजुर्बाकार और मुमताज मुदर्रिसों से CLC कोचिंग सेंटर परेपुरा में पा सकते हैं मुनफरिद तरबियत। यहाँ के तलबा को पहले ही मुल्क के खास इदारों में खासी कामयाबी मिली है। मजीद जानकारी के लिए इन फोन नंबरात पर राबिता करें 9906981888, 9906982888। इंजीनियरिंग हो या मेडिकल, आकाश इज बेस्ट। आकाश का फोकस अपने हर बच्चे पर बिल्कुल बराबर होता है। आकाश में हम शुरुआत बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ करते हैं। होशियार से होशियार बच्चे को भी सही कोचिंग और सही गाइडेंस की जरूरत है। देखिए, आकाश अपनी बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट करिकुलम और यूनिफॉर्मिटी सिस्टम की वजह से जाना जाता है। तो बच्चे का एडमिशन चाहे कश्मीर की ब्रांच में हो या फिर चेन्नई की ब्रांच में हो, उससे उसकी तैयारी पे कोई अंतर नहीं पड़ता। मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि आप बच्चे का एडमिशन अपनी नजदीकी ब्रांच में कराएं, ताकि बच्चे का ट्रैवलिंग में कम टाइम लगेगा। फैशन फिएस्टा, वादी में कायम मुनफरिद फैशन स्टोर, जहां पर 70% तक आला और मयारी मसनूआत पर छूट दी जाती है। यहां पर किड्स वेयर के साथ साथ आपके स्टाइल और अंदाज को चार चांद लगाने वाले गारमेंट्स, विंटर और समर वेयर, ब्रांडेड शूज और मुख्तलिफ आला किस्म के ब्रांड से वाबस्ता मसनूआत फरोख्त की जाती है। जल्द विजिट कीजिए हमारे फ्लैगशिप स्टोर, वाका 3rd फ्लोर, सिल्वर स्क्वायर, जवाहर नगर, श्रीनगर।
5, 4, 3, 2, 1, let's go.
1, let's go. There he goes. Good ball. Pretty close and pretty pacey as well. And SAAHIL ball not getting into the connection. It's a dot one. Slips in place a bit wider. No third man. Next one. Playing it beautifully. And a great stop from Akash Ayub. Surely saved 2 runs for his team. I believe still we have got some problems as far as the scoreboard is concerned, but we remember when there was an error, the score was on 114. So with the addition of these two, the score now shifts to 17 rather, for the loss of 1 wicket only. Here goes Amir to Boymir, standing tall rather. This is SAAHIL ball and a wonderful stop. Beautiful stop and saved 3 runs for the team. It's 118 for the loss of 1. Chasing 238, still 120 behind. Should not be problems for the likes of MLA Gymkhana Badgam. Next ball just played it off his hips down to the 5-leg region, and they go through for a single. It's 120. In he goes. Next one down the leg stump. And here comes the signal from the umpire Sonu. A bit late still. He just signals it's a wide. Another run to the total. Next one cuts. And the ball just goes down to the short point. SAAHIL, the owner of SAAHIL Electronic Shopian, does the job. In between the two batters, just go for a single. Another run now. This over has been pretty productive. If we talk about SAAHIL Electronic Shopian, no single boundary has been scored so far. This has been the only over where we find no boundary so far. This one played it beautifully. This is what I was telling, and this ball has crossed all over the deep point region for a massive 6 from Boymir. What a shot! Standing tall in the crease, relaxing and easing his nose, and just helping the ball straight over the deep point for another 6 to his Kelly. And the score reaches 126 after the completion of 7. Just 1-1-1 single Nelson there behind the line.
And this is surely going to be the wonderful chase of this tournament. And credit must be given to these two batters, Sohail Paul and Boyamir. Sohail Paul already set a record over here. He just created a record of scoring 50 runs of just 12 balls. And believe it, he just thrashed Yunus Jabalipura in his over, just scored 37 off that. And that was the momentum when he got into the confidence, even though if we look for the two catches that have been dropped off him, and it was Bilal Ghazi that moment. And when the luck is at you, if is it favoring you, you are surely having a good day at the office. I believe Salim Mir has been now given the ball, and he starts off with a wide. Irfan, welcome back with the action. वेल तो इस वक्त बड़ी शानदार बल्लेबाजी जारी है और इस तरह से सोहेल पॉल इस वक्त स्ट्राइक पर हैं और सलीम मीर का सामना कर रहे हैं सोहेल पॉल। अगली गेंद डिफेंसिव अंदाज में खेलने की कोशिश में कामयाब हुए और इस तरह से यहाँ रन नहीं मिला। तो इस तरह अगर देखा जाए एक बेहतरीन आगाज जिसको कैपिटलाइज करते हुए दोनों बल्लेबाज, और रन अब खासी तेज़ी से आ रहे हैं चूँकि रनों की रफ्तार 22 रन फी ओवर के हिसाब से रन यहाँ बोईमीर की बल्लेबाजी की वसादत से आए। अगली गेंद एक बार फिर से मिस करते हुए गेंद को, और गेंद दोबारा से विकेट कीपर के दस्तान हो गए। And I believe the score at the moment shifts to 126. And talking about the change in bowling now, they now started to produce some wickets as far as Salim Mir is concerned from Pinjura. Shopian is bowling good. This one chipping in and chipping in beautifully. There is a protection. Ishtiaq Rasool does the job. Only a single cruising. 1-2-7 for one. And the way these players from MLA Gymkhana started off the chase, this chase is going to be remembered for ages and ages to come. In goes Mir. Next one driven powerfully. Is he going to cut it off? Oh, lovely stuff. And this is a determination the fielders of SAAHIL Electronics have to show up, saving 2 runs for his team. It's 130. Still a long way to go in SAAHIL Electronics. Shopian need wickets to come back stronger. Next one slower, trying to reach the ball, not getting it there. It turns out to be a dot ball. And Irfan, I believe wickets only can do the job for SAAHIL Electronics Shopian to find themselves back in the game, or else, MLA Gymkhana batters are stealing with the show. डेफिनेटली मुझे लगता है जिस अंदाज से बल्लेबाजी हो रही है एमएलए जिमखाना बड़गाम के धुरंधर बल्लेबाजों की तरफ से, और अगली गेंद को फाइन खेला और ये गेंद फाइन लेग बाउंड्री लाइन से बाहर। जिस अंदाज से बोईमीर बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिस अंदाज से सोहेल पॉल दोनों के दरमियान जिस अंदाज की पार्टनरशिप बनी है, तो मैं समझता हूं कि यहां से हालांकि 20वें ओवर का वो इंतजार नहीं करेंगे 238 रनों के हदफ का ताकुब करने से। 20वें ओवर से पहले ही वो मैच को यहां अपने कब्जे में कर लेंगे और SAAHIL इलेक्ट्रॉनिक्स टीम को इस टूर्नामेंट से बाहर कर देंगे। Let's talk about only 8 over 7 bowled. Let's talk about only 8 over 7 bowled so far. Just imagine it, scoring 130 when you are chasing 238. You believe this is some sort of a score you will never find quite often in the T20 format. यकीनन आज तक हालांकि आपने अपने कमेंट्री कैरियर का जिक्र किया, लेकिन मैं भी अपने कमेंट्री कैरियर का पिछले तकरीबन 2 महीने से ज़ायद मैं भी कमेंट्री के फील्ड से वाबस्ता हूं, लेकिन मैंने भी अपनी कमेंट्री कैरियर में अब तक इस तरह की तूफानी बैटिंग नहीं देखी है। And here is the problems growing and growing for SAAHIL Electronics Shopian, that who is the bowler to gonna bowl, and they're showing faith in Amir Lemon, continuing, and he is into his over number 3. .130 for the loss of 1. It's gonna be over number 9. This time, on the legs, on the pads, all he need to do just plays it across and just pointed the ball onto the top of the commentary box. Irfan, for a moment it looked that the ball was coming towards us. What do you believe?
डेफिनेटली बॉल जो है लैंड हुई सीधे यहाँ कमेंट्री बॉक्स की छत पर और इस तरह से यहाँ स्कोर जो है वो 140 पर पहुंचा है, 141 माफ कीजिएगा। और बड़ी शानदार बल्लेबाजी, अगली गेंद फॉरवर्ड अगर खेलेंगे कोशिश चंद्र भी किनारा और गेंद 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। 145 now. Everything is going MLA Gymkhana's way. Every ball they play, they trying to approach with the defense. The ball just hitting the inside edge, goes past the final leg for 4. They just play across the line. They just finding the sixes. What? 145, 45. Be cut, and meanwhile there is a dot ball. And I was telling you, Irfan, the way these batters just hitting the ball, everything going their way. Next ball just deflected onto the short mid-on. And Ahmed does the job himself, finding a single. 146. And we have 2 balls left of this over number 9. Just believe it. Only 9th over in progress. And we are having 146 on the board. Next ball to Boymir. Too low to cut. Not finding the connection. And the ball goes straight to the keeper for no runs. Last ball remaining of this over number 9. SAAHIL Electronics. Shopian, the owner. Mr. SAAHIL is standing at the backward point. And next one, that has been pulled. Then the ball hitting the signboard over there, and over the fence it goes. Exactly the score shift is to 150, and we are done with the over number 9. Now the score is being displayed at our screens. It's 150. Orange problem. Sohail ball 45. Sohail 45. Sohail 45. And we find Bilal Ghazi back into the attack. And it's Sohail Paul who is batting on 45, just requiring 5 runs. It's 150 for 1. Next ball in the gaps! In the gaps! All the fielders could see just watching the ball crossing the fence for 4 runs. And this is the 49 now. He goes on to requiring just 1 run to go past his 50. What a glorious knock from Sohail Paul. Is having a marvelous innings. And on the other side, we'll find Boymir on 87. Next ball, he just passes the short third man down to the third man region for 4 runs, and this is half century for Sohail Paul. What a glorious half century, and what a time to get it. Chasing 238, and they're finding themselves at 158 for the loss of 1 wicket only. And is being applauded, is being shown a great happy mood as far as the dugout of the MLA Gymkhana concerned. And Sohail Paul completing his half century, glorious batting from him. राइट सो अगर देखा जाए तो उन्होंने 25 गेंदें खेलकर अपनी हाफ सेंचुरी निसफ सेंचुरी मुकम्मल की और शानदार पारी 8 चौके 2 छक्के स्ट्राइक रेट 200 का। और अगली गेंद उड़ता हुआ शॉट, गेंद सीधे वहां आ गई है विकेट कीपर के दस्तानों में। Cross towards the wicket keeper, and my friend thought for a while that the ball was just sailing in air. Next ball, just dot ball, not going for the runs. What a start and what a chase. This will be remembered for ages and ages to come. Absolutely a real carnage from MLA Gymkhana Budgam. Well, मुझे लगा था बॉल उड़ रही थी, ये चिड़िया दरअसल उड़ रही थी। Next ball, down the track he goes and not hitting the ball. It comes out to be a dot ball again. And it's 158 at the moment, I believe. Just, if we look at the score, they are now chasing around 80 to 85 runs they are in need of to go for in the chase. It should be a cakewalk for MLA Gymkhana.
वेल अब 7.5 के औसत से रन बनाने हैं और 80 रन अब बनाने हैं। अभी भी हालांकि 63 गेंदें बची हैं, तो कुल मिलाकर अब काम बहुत आसान हो गया है। Absolutely, it's pretty simple and too easy for them to go over. Next ball, keeping low, again a bit quicker. And once again, no more runs to the team. That's the end of over. I believe 10 done. It's 158 for the loss of one. Boimir batting on 87 of 30. In Sohail Paul, 53 of 27. ज्वेलरी तो सब खरीद लेते हैं, लेकिन खास ज्वेलरी खास लोग ही पसंद करते हैं। कारीगरी ऐसी जो मन को छू ले और खिदमत ऐसी जो दिल को छू ले। तो हमें खिदमत करने का मौका दे और तशरीफ लाएं असावीर ज्वेलर्स, कश्मीर का अपना ब्रांड, हरी सिंह हाई स्ट्रीट, श्रीनगर। मुखलिसाना और ताजगी से भरपूर कमल मसाले, वादी का दर्जे अव्वल और अपना ब्रांड। ये सिर्फ मसालों तक ही महदूद नहीं, बल्कि कमवल आप तक जायकेदार अचार और शाही कहवा भी पहुंचाता है। ग़िज़ाइयत और लताफत से भरपूर कमल मसाले रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल। हम हैं कमल मसाले। मसाले तो बहुत हैं, पर कश्मीर की कोख से खास चुने मसाले जिनकी ताजगी और स्वाद रहे बरकरार। ऐसे उम्दा मसाले बनाते हैं सिर्फ लज्जत। And back we are with the action. Ishtiyaq Rasool finding himself back on the track to bowl over number 11. And Boimir just finding one more run to his total. He goes on to 88 of 31. It's 159. Sohail Paul now getting ready to face Nag. That's one. Pulls beautifully. That is in the gaps. In the gaps all along the ground. The ball just moves away, dances away, and goes away for 4 runs. राइट, तो सलीम मीर की बात करें, सलीम मीर का ये दूसरा ओवर है और उन्होंने अब तक 13 रन खर्च किए हैं, जबकि स्कोर 163 पर पहुंचा है। अगली गेंद यहां पुल कर दिया इस गेंद को। माय गॉडनेस, कैच ड्रॉप हो गया और गेंद 6 रनों के लिए डीप कॉर्नर बाउंड्री लाइन से बाहर। Well, it was Bilal Ghazi out there at the deep mid-wicket region. He could not position himself properly, and that's why he could not get to the catch, and ball just goes over his heads for yet another 6 from Sohail Paul. He is cruising towards the big score, 63 of 30. It's 169. Wraps him on the pad, a loud appeal, and down the leg stump it was going. And umpire Sono reflexing it's a leg by. 170 for the loss of one. And this will be surely a time to celebrate for MLA Gymkhana Badgam. They will remember it for ages and decades and years to come if they get over the line. तवारीखी जीत होगी यहाँ एमएलए जिमखाना बडगाम की, जिसको वो सदियों तक याद रखेंगे। और मैं समझता हूँ कि एक तवारीख शिकस्त भी होगी साहिल इलेक्ट्रॉनिक शोपियान की। Indeed, it will be historical from both the perspectives. And next one, and is in the gaps. Is it gonna go all the way? No, Akash Ayub just finding himself stuffed the ball, and 2 more runs to Boimir is cruising towards 90, I believe. And it's 173 for the loss of one. वेल बाबा साहब, अगर बात करें तो बॉडी लैंग्वेज अब साफ तौर से जाहिर है, वाजिया यहाँ टीम साहिल इलेक्ट्रॉनिक्स की, क्योंकि जानता है कि काफ़ी मार पड़ी है गेंदबाजों को और पूरी तरह से यहाँ बॉडी लैंग्वेज जो है ख़राब हो गई है। The body language seems completely... That is Boimir! That is once again Boimir! I believe the ball has hit the window panes of this residential area out there in the deep fine region. Go, and going. That's the ball. I believe Boimir with that goes on to 94, if I'm not wrong. He just needs 6 more runs to get over the century. He will be the 2nd centurion of this tournament. Already we got yesterday one, Ishfaq Shah. And talking about the century, that is surely going one of the quickest century. Just 32 balls and 94 is batting on. And talking about the score, it's 179 for one only. We are done with the over or not? I believe yes. It's 179 for the loss of one after the completion of 11.
आवरती को ना and we see a change in bowling. It's going to be Akash Ayub. There is some technical, there is some error with the scorer out there. Actually, 6 runs were to be counted for Boimir. Is batting on 94, and we find SAAHIL Paul. He will be batting on just 65. It's SAAHIL Paul on the crease now. Boimir requiring just only 6 runs to go through his century. Next ball, oh my goodness, what a ball. I can't show you for a moment, thought that he had got his man, eventually not, and the ball hitting and rather brushing the pads. And they go through for a leg bye. क्या बोईमीर यहाँ अपनी सेंचुरी छक्के से मुकम्मल कर पाएंगे? 94 पर नाबाद हैं और अब तक तकरीबन 7 से 8 छक्के उन्होंने लगाए हैं और तैयार हो रहे हैं इस ओवर की अगली गेंद का सामना करने के लिए। आकाश अयूब पर खासा दबाव, बोईमीर इर्द गिर्द उन्होंने फील्डिंग का जायजा लिया और 94 पर नाबाद। अगली गेंद बैकफुट पर जाकर खेला 1 रन के लिए मिड विकेट की जानिब और इस तरह से 95 पर पहुंचा बोईमीर। Surely we have to wait for that glimpse of Boimir to get over the line for scoring that wonderful fastest century of this tournament. 180 for the loss of 1. Next ball in the gaps. Is it going to cross all the way? No, stopped within the limits of the boundary. And SAAHIL Paul will find 2 more runs. He goes on to 67 and score shifts to 183 for the loss of 1. This is the 12th over in progress. And talking about the floodlights on, and we are having a wonderful contest, but eventually this is turning out to be a one-sided encounter the way these 2 batters are played, Irfan. Definitely it looks like one-sided encounter और बोईमीर की मैं दाद देना पसंद करूंगा। 32 गेंदें खेलकर उन्होंने 95 रन बनाए हैं। अगली गेंद SAAHIL पॉल के लिए स्कूप करने की कोशिश पॉल द्वारा, लेकिन यहाँ अभी भी एक डॉट गेंद और वाइड गेंद आई है ये और स्कोर 183 पर पहुंचा है। 1 विकेट के नुकसान पर पार्टनरशिप काफी लाजवाब बनी है। Indeed, this partnership has gone around 170. We believe the first wicket fell when the score was around 10. All the 10 runs were scored by Tajamal Baba. But since then, this is going to be the highest partnership as well. SAAHIL पॉल के लिए ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, ड्राइव किया जोरदार, इश्तियाक रसूल मौजूद, किसी रन का इजाफा नहीं। आज हर गेंदबाज को मार पड़ी है SAAHIL इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात करें। हालांकि यहाँ MLA जिमखाना बडगाम की गेंदबाजों को भी मार खानी पड़ी और वापसी जवाबी कार्रवाई बड़ी खतरनाक थी। Indeed, a great revenge. Next ball sweeps it, but not, and up goes the finger. And Akash Ayub, he surely has got this wicket, and there is a review. There is a review for the LPW by SAAHIL Paul. This will be checked by the TV umpire, Mr. Tariq. Let's see. I believe he looks quite confident over there. Maybe the ball might have hit the bat first, and that's why the decision might go in favor of the batsman over there. वेल मैं समझता हूँ ये डिसीजन काफ़ी अहमियत का हामिल दोनों टीमों के लिए और अगर देखा जाए तो थर्ड अंपायर के लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहेगा यहाँ पर रिव्यू को शो करना। Indeed, it will be quite challenging for TV umpire Mr. Tariq Saab to just come out with a decision of this LPW. But let's talk about the score. It's 183 for 1. What a wonderful partnership. बेहतरीन पार्टनरशिप अब तक और अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर 173 रनों की पार्टनरशिप बनी है। And that to in T20 format. That is a record partnership. Indeed, that is a record partnership, especially if we talk about here in Kashmir cricket and talking about J&K Qualifiers League. Wonderful partnership, great partnership, and the most dominant of the 2, Boimir, is closing a century batting on 96. It just requires 4 more runs. और इस तरह से यहाँ अभी भी वक्त ले रहे हैं टीवी अंपायर।
at your screens you can see the glimpses, the visuals. Tries to play it, tries to sweep it. All important thing is whether the bat was involved in that or not, or else we find him in front of the wickets quite cleanly. If there is no bat involved, he might be given LPW. Still waiting for the decision to be done by Mr. Tariq Saab, the TV umpire. And up goes the signal, it's out. SAAHIL Paul will have to depart. Looks quite disappointed, but he will have to go. वेल रिव्यू गवाया है यहाँ एमएलए जिमखाना बड़गाम की टीम ने, लेकिन यहाँ पर काफ़ी डिसअपॉइंटेड नज़र आ रहे हैं SAAHIL पॉल, और इस तरह से यहाँ LBW आउट करा दिए गए। वो तो 173 रनों की पार्टनरशिप उन्होंने कायम की यहाँ बॉय मीर के साथ, और अब मैच पर पूरी तरह से काबिज है टीम एमएलए जिमखाना बड़गाम। 55 रन अभी भी चाहिए। Well, no problems whatsoever, no issues, no worries as far as Gymkhana concerned. Even though SAAHIL Paul departs, he departs for 67, and he is getting a great round of applause. Great round of applause from the dugout. यकीनन हकदार हैं, तारीफ के काबिल उनकी पारी। और इस तरह से अगर देखा जाए तो बाबा क्या आपको लगता है वाकई यहाँ मौके पर ब्रेक थ्रू आया? मुझे तो लगता है काफी देर हो गई है। Well, indeed, it's very late. You know, it comes too late. But knowing the glorious uncertainties of the game of cricket, still we can't predict pretty early. You know, having to need still 55 more runs, having 8 wickets in hand. You know, at one side of the game, it should not be any problems for MLA Gymkhana to chase these runs down. But who knows? In the game, and in the T20 format of the game, you never know what quickly gets onto you. And I can find only one way to get over. Having 8 wickets in hand for MLA Gymkhana. Boimir needing 4 runs to get over his century. Let's see whether he gets here, and if he gets, he surely will be celebrated for time to time come. बोईमीर की सेंचुरी पर तमाम तरतमाशाओं की तवज्जो मरकूज, और वो चूंकि 96 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, और
अब देखना होगा कि क्या वो अपनी सेंचुरी चौके से पूरी करेंगे या छक्के से या सिंगल से काम लेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जहाँ तक मेरी वाबस्तगी बॉयमीर से रही है, ज़ाती तौर पर उनको जानता हूँ, वो इस वक्त जीत की तरफ अपने कदम जो है वो गामजन रखेंगे। टो की कॉल है लेकिन एक ही रन से वो मुतमईन होंगे और अब जाके वो 97 पर पहुंचे हैं। It goes on to 97, and we were talking about body language of SAAHIL Electronics Shopian. Already playing one player short in the fielding. They just are going with only 10 players. You believe somehow it can be a kind of a reason for having many runs on the board for them? यकीनन आज अगर देखा जाए 238 रन एक बड़ा हदफ होता है और अगर आप उस हदफ को भी नहीं बचा पाए तो अगली गेंद फाइन खेला, क्या बाउंड्री लाइन से बाहर जाएगी गेंद? जी हाँ, बाउंड्री। And this one just goes down to the fine leg. Let's talk about Ishtaq Rasool. He's not bowling medium pace as well. He's just bowling spin. I believe some extent it's not great as far as the caliber of Ishtaq Rasool. Not bowling as per his class is concerned. He just bowls slower. He just bowls spin at the moment. To some kind of a strategy, I believe. That's not good cricket at all if we talk about Ishtaq Rasool. Well, I must say that nothing is going in the way of SAAHIL Electronics Shopian. चाहे Ishtaq Rasool हो, down the track आए मोहसिन, एक रन तेजी के साथ हासिल किया. That's an excellent running between the wicket. और अपील हो रही है वहाँ रन आउट की, तो दूसरा रन भी मुकम्मल किया, लेकिन अब अगला डिसीजन थर्ड अंपायर का. We have a decision for the TV umpire regarding run out. Akash Ayub just throwing the ball on the non-striking stumps. Eventually the ball hitting the stumps, and meanwhile we have got a referral. And Tariq Saab once again has got a job to do. And I believe his candidate, his student, it was Musin who was going down the dangerous side. Let's wait and watch what will be the decision. But coming forward for MLA Gymkhana, a moment to cherish, a moment to remember. And the decision comes, he survives the run out. So it will be 2 more runs counted. It's 190 for 2 now. Just 48 runs behind MLA Gymkhana. Crowd loving the game. So are the viewers on ANN News channel. And Ishtaq Rasool not getting it right, not batted well, just chipped in with 28 only. And now he has been given a thrash, a smash, and a powerful hitting. Next ball, chips him in, and that goes over the line. And this is Boy Mears, I believe, century over there. Is being applauded by all his teammates, and why not? If you get to the century, there's a shout at the part and time for the celebration. Just listen to the celebration and listen to the roaring sounds of the dugout over here as far as MLA Gymkhana Badgam is concerned. He's being patted by the man, Mr. Musin over there. It's a real time to celebrate. He's being patted by Mr. Akim Maxi as well. And Boy Mir, my boy, is surely gone through the century. And this is the second century at tournament, the fastest of the two. Boy Mir जिस अंदाज के तबाहकुन बल्लेबाज हैं, यकीनन उन्हें यहाँ आउट करना एक चैलेंज साबित हो रहा है, और जिस अंदाज से उन्होंने सेंचुरी अपनी मुकम्मल की, मैं समझता हूँ कि आज उनकी जिंदगी की सबसे अहम पारियों में से ये पारी शामिल हुई है. In goes knock.
Next ball just waited. Chance of a run out. Oh! Not hitting the target. And Mir goes for one more run. Let's talk about the score. It's not being displayed on the screen. Next ball pulls. नए ओवर की पहली गेंद और वहां स्वीप करने की कोशिश की बल्लेबाज ने, लेकिन कोई रन नहीं और 197 रन स्कोर अभी तक बना है। यहां टीम एमएलए जिमखाना बडगाम का, और इस तरह से एक बार फिर से तैयार मोहसिन, और गेंद को उठा दिया, स्लो कर दिया है गेंद, मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर गई। 6 रन के लिए जोरदार छक्का। Well, 200 comes up for MLA Gymkhana Budgam. It's 203 now. What a shot. 203 रन और अब जाके 35 रन यहां से स्कोर कर रहे हैं एमएलए जिमखाना को, जबकि यहां बड़े दिफाई अंदाज से खेलते हुए बल्लेबाज, ताहम अगर देखा जाए तो छक्का इस ओर से आ चुका है, मजीद रन आने की तवक्को, और साहिल इलेक्ट्रॉनिक शोपियान मुझे लगता है कि वो अपना बोरिया बिस्तर बिल्कुल यहां समेटने में लगे हुए हैं। अगली गेंद आफ्टर 9 से बाद ड्राइव किया पॉइंट की जानिब, गालिबन डीप कवर पॉइंट की जानिब 1 रन के लिए। नाउ इट ब्रिंग्स बोईमीर ऑन स्ट्राइक, ही इज नॉट आउट ऑन 100 रन। सो बोईमीर शानदार सेंचुरी के साथ अगली गेंद का सामना करेंगे। चिप किया हवा में, माय गुडनेस, बॉलर के सर के ऊपर से, हालांकि ऐसा मालूम हो रहा था कि शायद गेंदबाज के हाथों में जाएगी गेंद, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गेंद में थोड़ी सी ऊंचाई थी और ऐसे में 1 रन हासिल हुआ मिड ऑन के जानिब खेलते हुए इस गेंद पर बोईमीर को। स्कोर 204 पर पहुंचा, 205 पर पहुंचा है। इस दौरान अगली गेंद ओवर की क्लीन बॉल्ड हुए हैं मोहसिन, इसी के साथ एक और विकेट गिरी है। यहां कुल मिलाकर तीसरी विकेट एमएलए जिमखाना की, और अभी भी यहां से 33 रन दूर हैं एमएलए जिमखाना बडगाम। Well, just 33 runs behind, having 7 wickets in hand. We find Mohsin now walking back to the dugout. Still no problems, no issues and no worries, because Boymir still on. 205 for the loss of 3, and I can show you a non-regular bowler picking the wickets for SAAHIL Electronic Shopian. And must be some lessons for the regular bowlers. Part-timer doing the job. And you believe it is too late for SAAHIL Electronic Shopian to get back in the game, Irfan? काफी देर हो गई है मेहरबान आते आते, और इस तरह से यहाँ मैंने पहले कहा कि SAAHIल इलेक्ट्रॉनिक शोपियान की टीम जो है वो इस वक्त अपना बोरिया बिस्तर समेटते हुए नजर आ रही है मुझे इस टूर्नामेंट से। और इस तरह से दिलावर अब नए बल्लेबाज आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। दिलावर अली, बिलाल गासी को गेंदबाजी हालांकि इस वक्त अता की गई हैं। बिलाल गासी के इस ओवर में एक छक्का आया है, एक सिंगल 7 रन इस ओवर से आए, और 205 स्कोर है बोर्ड पर। अभी भी 35 रन बनाने बाकी हैं। I would love to correct you, it's only 33. 33 now requiring, and 7 wickets in hand. Bilal Ghazi. We have got Bilal Ghazi back in the attack. He was also taken for runs. 36 balls, 33 runs, 7 wickets in hand.
Short of length. And that was a beauty. And Boimir was trying to drive it down to the third man, but not, it was written there. And technical errors constantly going on with the score. That's why the score is not being displayed on the screen of your phones and TV. A ball, again a dot ball. And having the first two balls at the dot ones. 203, 205. Now remains 33 of 34. Let's see whether Bilal Ghazi gets the wicket of Boimir, and if he gets, we can find some momentum. Next one, that is a beautiful chip shot. To the fence. The ball travels all the way for 4 runs. You know, I can simply believe. Kuntra. बॉयमीर अब अपनी मर्जी से मानो स्ट्रोक्स खेल रहे हैं. अगली गेंद अपनी बॉडी से काफ़ी दूर ड्राइव किया. 104 पर खेल रहे हैं और जब 104 पर बल्लेबाज T20 फॉर्मेट पर पहुंचता है, यकीनन उसको जो भी बॉल आती हैं उसकी जानिब, तो वो टेक्निकली बड़े साउंड अंदाज में खेलता है. और अगर देखें तो बॉयमीर इस वक्त मुझे लगता है कि विराट कोहली से भी बढ़ के यहाँ नजर आ रहे हैं. Indeed, he does. Next ball plays defensively. Straight to Ishtiaq Rasool, and one more run, and believe it, it's 210. That's 210. Can you believe it? Chasing a massive score of 238 on Kani Memorial Stadium, a big ground with big dimensions, not easy to chase down, and we are finding the left-handed batsman Mr. Dilawar. First time in this match we find a left-handed batsman. You believe is going to add more to the problems of SAAHIL Electronic Shopian? यहाँ से चूँकि अब 26 रन ही बचे हैं जीतने के लिए, और मैं समझता हूँ कि बहुत हद तक डैमेज हुआ है SAAHIL इलेक्ट्रॉनिक्स की टीम को. अगली गेंद को ड्राइव किया, गेंद फिंगर टिप्स को छूती हुई बाउंड्री लाइन से बाहर गई है. 4 रन के लिए 214 स्कोर. Once again, not a good fielding inside the circle by Akash Ayub. He was running behind, and ultimately the ball just hitting the fingers but crossing the fence, extra cover region for 4. And with this we come to the conclusion of over as well, and Dilawar gets off the mark with that stylish cover drive. A bit in air, chips in air, but still finding the boundary. It's 214 and we are away just 24 of the remaining 30 balls. And it's Akash Ayub. Plays the ball in the gaps. And beautifully stopped. And a good running between the stumps. A wonderful running. And still, let's talk about the physical fitness of Boimir. And a crossing century, still going great and running between the stumps. Like a very kind of a great runner between the stumps, Irfan. इस ओवर की अगली गेंद पुल कर दिया इस गेंद को, फील्डर, and what a catch! Absolutely a great catch by Salimir. The Boimir up in Shopian, and finally the innings of Boimir comes to an end. I believe he just scores 106 runs. And talking about the catch, that's a wonderful catch. And Akash Ayub once again, the wicket taker, he gets the wicket number 3. It's 216 for the loss of 4 now. 106 रनों की बड़ी शानदार और गजबनाक पारी यहाँ SAAHIL इलेक्ट्रॉनिक शोपियन के खिलाफ. And here comes the next man, Jiali. And he will be surely given a great round of applause, standing ovation. Here starts the tail, here starts the cheer and applaud. What a wonderful knock. That's a great knock from the likes of Basharat. That's Boimir, 106. And ultimately around 10 sixes he hit in that innings. He will remember this inning for eons and eons to come. 216 for 4. Chess. 216. Ja, das ist Kasan Mushazlayu.
thrash. If we talk about his, I believe he just gave away 64 runs in his quota 4. And it's time for him to finish this time. Waits for the ball. Guides it beautifully down to the third man region, and the fielder just gives up the chase. I believe he has just stopped the ball with the boot inside the boundary line. Yes, he has. And just a double. I believe just a single run recorded. Only a single. Only a single. It's 217. It's 217 for 4. And it's going to be Dilaver now. I can't show you. I believe he is the only bowler who has got 3 wickets to his cola. In he goes. Round the stumps. This time waits and just cuts towards the extra cover region. Aalimi does the job. They go for a single. Crowd waiting patiently. जिया अली के हवाले से अगर बात करें तो उनमें वो कैलिबर हैं, उनका हाई बैक लिफ्ट है, दाएं हाथ के बल्लेबाज, और यकीनन वो उन्होंने बहुत सारे मैचेस एमएलए जिमखाना बडगाम के लिए फिनिश किया और आज एक बेहतरीन फिनिश करना चाहेंगे यहाँ से और फिनिश करते ही जाएंगे। अगली गेंद जिया के लिए ड्राइव किया इस गेंद को गैप में और गेंद बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन्स के लिए। Absolutely, you can't pitch the ball off flight to delivery. All you need to do just square drive the ball down to the backward point region for 4 runs. That's 221. 221. 16 runs more required. Big mix up between the two. Oh, I can't show you. And this is run out. This is run out. I was telling you, I can't show you. It fairly jumps and jumps to the perfection, just having a shy. Rather, it was Ishtiyaq Rasool. And finally, we get another run out, another man who departs, and it's once again Akash Ayub. Can this turn out to be the turning point? No, no. Go on, Jerang. राइट, सो एक और विकेट गिरी है यहाँ पर 222 के स्कोर पर। जिया के विकेट बतौर रन आउट वो यहाँ आउट हुए हैं और उनके लिए बड़ी बदकिस्मती यहाँ और बड़े ही नाखुश उदास चेहरे के साथ वो वापस लौट रहे हैं। 16 रन अभी भी बनाने हैं यहाँ से। सोलह रन अभी भी बनाने बाकी हैं यहाँ से और इस तरह से यहाँ स्कोर 222, 5 विकेटों के नुकसान पर। साहिल इलेक्ट्रॉनिक शोपियान बड़ी तशवीशनाक हालत में इस वक्त और आज वो अपने इस लीग का दूसरा मुकाबला खेल रहे हैं और इस तरह से यहाँ अगर देखा जाए तो काफ़ी खुश नज़र आ रहा है खेमा इस वक्त एमएलए जिमखाना बडगाम का। Smiling faces, smile all over the faces if we talk about MLA Gymkhana dugout, and the crowd are loving it. They are surely loving it. Looking great, ecstatic, so passionate, and they are showing some great excitement in this game. Let's talk about the new batsman who walks to the middle. It's Rauf Mir, who just started the bowling proceedings, but unfortunately for a Gymkhana concerned, but he was given a thrash. Down the wicket he goes and not going for the runs. 2 dot balls on the trot. 16 runs away. 16 runs away. Let's talk about we have got around 22 balls left. It should be a cakewalk.
Easy things to be done. In goes Salimir. Oh, again beaten on the trot. Again beaten on the trot. Is constantly being beaten on that off-stump channel. SAAHIL, the owner of SAAHIL Electronic Shopian, stands at the backward point. We see a deep third man as well. We find a covers as well, a long off as well, a mid off as well. Again beaten outside the off stump, constantly beating onto that off stump channel. And Irfan, 4 balls is being beaten on the trot. वेल चूंकि ये 17वां ओवर हैं और 4 गेंदें फेंकी जा चुकी हैं, जबकि अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर अब यहां से 14 गेंदें बची हैं, 20 गेंदें बची हैं, माफिया। और इस दौरान ओवर की गेंद पोल करने की कोशिश, दैट्स अनदर डॉट डिलीवरी, 5 गेंदें डॉट। And can we have the first maiden over of this very important match and still chasing? They are in the hunt, I believe. Well, जहां तक मैं देख रहा हूं, दिलावर जो हैं हर गेंद पर हिट करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि यहां इस अंदाज का अब तकाजा ही नहीं है। बोईमीर ने आपका काम बड़ा आसान कर दिया है और आपके पास 19 गेंदें, 24 गेंदें थी, अब 19 गेंदें रह गई हैं, 16 रन बनाने हैं और आपने 5 गेंदों में अब तक 1 रन भी नहीं बनाया। Well, that is something to be thought about. That is something to be really, that is something to be done about, I believe. No need to go for some big strokes. All you need to do is just chip in for 1s and 2s. And already the job has been done by the likes of Boimir. Down the track he goes, appealing for the cut, behind up goes the finger. This is a wicket maiden over, bowled by Salimir, and guess what? Number 6 goes. And can you find MLA Gymkhana in a bit of a bother? वेल विकेट मेडन ओवर यहां पर, और इस विकेट मेडन ओवर ने मान लो सोने पे सुहागा बना दिया है यहां पर टीम SAAHIL इलेक्ट्रॉनिक्स शोपियान को, और मैच में एक बार फिर से वो किसी हद तक वापस आ गई हैं। आप जाके 18 गेंदें बची हैं और 16 रन अभी भी बचे हुए हैं, जबकि दिलावर की मैं यहां पर बात करूंगा, एक बड़ी गैर जिम्मेदाराना बल्लेबाजी और जिस के नतीजे में उन्होंने 6 गेंदों का सामना किया और विकेट मेडन बुलाकर अपनी भी विकेट उन्होंने गंवाई। And surely responsible batting as far as Dilaver is concerned. 6 balls he faced, no run is scored, and it just turns out to be a wicket maiden. Let's go to the number 3 overs only left. And we are just having 3 overs only left, means equation stands 16 of 18. And let's talk about the wickets. Only 4 wickets remaining. You believe there may be a bit of a miracle or a bit of a turnaround? मैं समझता हूं अगर यहां MLA जिमखाना बड़गाम की टीम हार जाती है तो ये ओवर जो विकेट मेडन ओवर रहा है, दिलावर जो बल्लेबाजी कर रहे थे, यकीनन दोषी ठहराए जाएंगे, क्योंकि अब तक गेम में बनी हुई हैं भी और थी भी, लेकिन इस ओवर से खासा दबाव, अब परेशानी के आसार साफ तौर से यहां MLA जिमखाना बड़गाम के चेहरे पर दिखाए। और यहां से मैं समझता हूं अगर 1 विकेट और गिरी और ये ओवर भी 3-4 रनों पे ही रुका तो वाकई MLA SAAHIL इलेक्ट्रॉनिक शोपियान की टीम जो है डेफिनेटली वापस आएगी। Let's talk about the beauty of T20 cricket. You know, the pendulum was surely oscillating through MLA Gymkhana's way till 15th over, but rather 16th over, but now it goes a bit in the way of, if we talk about SAAHIL electronic Shopian. Next ball driven on the onside. I can't show you into the last over of his quota, who has got 3 wickets to his name, the man who just the only successful bowler so far, even though he is a non-regular bowler. सफदर अली अब बल्लेबाजी करने के लिए भेजे गए हैं और सफदर उनमें काबिलियत हैं, वो कैपिटलाइज कर सकते हैं अगली गेंद। ये सही सोच है, आप 1 रन लेकर स्ट्राइक और रोटेट करें, दैट्स अ वेरी गुड सिंगल एक्चुअली। और आप जाके यहाँ से 14 रन बनाने, 2 रन आए उस ओवर से। और मैं समझता हूं कि T20 की यही नज़ाकत है, T20 की यही खासियत है कि अगर मैच आखिरी गेंद तक बना रहे, तज़ब्ज़ुब बरकरार रहना चाहिए, तब जाके तमाशाई भी बड़ी दिलचस्पी का इजहार करते हैं। Let's believe in a full contest here. We would love to have this game going towards the death over, and then it will go down the wire so that the crowd will love this game. डेफिनेटली क्राउड जिस अंदाज से इस वक्त एंजॉय कर रही है इस मैच को, और बड़ी सुहानी शाम मैं समझता हूं। अगली गेंद रॉबमिर के लिए, गेंद को भेज दिया डाउन टाउन, दैट इज अ ह्यूज 6।
Rauf Mir, you bowl in the slot. You just flight the ball. All you need to do is to just watch the ball sailing over the deep mid-wicket region. That was indeed a power in that stroke, and it goes towering six. That is a massive and that is a monstrous blow from the man Rauf Mir. Wow. वेल इस छक्के से एक बार फिर से हरारत पैदा हो गई है एमएलए जिमखाना के खेमे में. वाइड बॉल, अब 7 ही रन चाहिए एमएलए जिमखाना को जीतने के लिए. Just 7 runs away. And will Rauf Mir finish the game in style in this very over? We have to wait for the over number 19 as well. Next ball, playing beautifully and down to the final leg region. The ball goes for 4 runs. वेल बाबा निसार साहब, मुझे अब एक बात याद आ रही है यहाँ पर. जब ब्रेक हुआ था, जब फर्स्ट इनिंग के बाद ब्रेक लगा था, तो मेरी बात एमएलए जिमखाना बडगाम के ओनर सईद मंजूर से हुई थी और उन्होंने कहा था कि आप भाई फिक्र ना करें, हम 7 गेंदें ऐसे ही रखेंगे. डेफिनेटली, और चेज करके देंगे वापस. You feeling happy for MLA Gymkhana? देखिए, ओनर हैं टीम के और डेफिनेटली जानते हैं अपनी टीम की सलाहियत. अगली गेंद को ड्राइव किया, जोरदार ड्राइव, फील्डर पीछे, 1 ही रन मिलेगा. अब यहां से मुझे लगता है कि 2 ही रन चाहिए जीतने के लिए. Only 2 runs requiring. 2 runs requiring from 14, rather 3 runs requiring. There is a correction, it's only 2. It's only 2. That is down the leg stump. That is going over the line with a 2 or 3. They have done it. They have done it. They have done it. This is the wonderful chase, I believe. The highest chase, I believe, in the J&K Qualifiers league so far. And credit goes to Boy Mir and the troops of MLA Gymkhana. They deserve the great celebration and they will have this night to remember for ages and ages to come. Wow. वेल तवारीखी जीत आज गनी मेमोरियल क्रिकेट स्टेडियम पर देखने को मिली है. यहाँ टीम एमएलए जिमखाना की जानिब से और इस तरह से काफी खुश उनका खेमा और सेलिब्रेशंस आर गोइंग ऑल अराउंड. ये था एक सबसे, यहाँ मैं समझता हूँ J&K क्वालिफायर्स लीग का सबसे हाईएस्ट रन चेस और इस तरह से 238 रनों का हदफ बासानी चेस किया. एंड क्रेडिट गोज टू बॉय मीर. ही मेड 106, 106 रनों ने बनाए और सुहेल पॉल ने भी एक शानदार पारी खेली. Well, that's all from here. अब मिलते हैं पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में.
बैट्समैन ने रन करे चोर क्या बैट्समैन ने रन करे चोर क्या बैट्समैन ने रन करे चोर बॉलर लोग कताई लो लो दोस्त सरी आई लो लो बॉलर लोग कताई लो लो दोस्त सरी आई लो लो क्रिकेट गिंदने ट्राई लो लो क्रिकेट गिंदने ट्राई लो लो
के जाही जलवे दिखाओ तू जीते या फिर हारे हमको तुमसे है प्यार अभी और बहुत मैदान है तू खेल खेल मैं खेल दिखा खेल दिखा मैदान में तू खेल दिखा मैदान में तू खेल दिखा क्रिकेट गिनने द्राई लो दोस्त सरी आई लो क्रिकेट गिनने द्राई लो दोस्त सरी आई लो जोश सरी आमची रंग रंग वर्दी लगती क्रिकेट मैच जमाई लो दोस्त सरी आई लो क्रिकेट मैच जमाई लो दोस्त सरी आई लो बॉल बस चिल्ली से बॉल अपोर बैट से मैन ने रन करे जोर क्या बैट से मैन ने रन करे जोर क्या बैट से मैन ने रन करे जोर बॉलर लोग कताई लो दोस्त सरी आई लो बॉलर लोग कताई लो दोस्त सरी आई लो क्रिकेट गिनने ट्राई लो क्रिकेट गिनने ट्राई लो Hello. Mic check. 1 2 3 1 2 3. Hello. What? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am your host, English commentator Baba Nisar, and live we are on the platform of ANN News, organizer of this very J&K Qualifiers League. Today we were having the match number 10. It was a Pool B match. It was a SAAHIL Electronic Shopian fighting out against the likes of mighty MLA Gymkhana. Toss won by the captain of Electronic Shopian, SAAHIL Electronic Shopian. It was Mr. Akib, and he was having no hesitation in batting first to put up a massive score on the board of around 237. And eventually, what a chase by the MLA Gymkhana, and they finally have started their streak of the winning. So big hands to MLA Gymkhana out here. We have got the two captains. First, we would love to have a chat with SAAHIL Electronic Shopian captain, that is Mr. Akib. Please come to the front and have a chat with us. Akib, tough luck. The way you started around 230, a massive score on the board, but you could not win. Just some words. Bismillahirrahmanirrahim. हमने तो अच्छा मतलब कि इतना चेस किया था, हमने अच्छा टारगेट रखा था, लेकिन इन्होंने जो अपोजिट टीम के प्लेयर्स है इन्होंने अच्छा एफर्ट दिया, लेकिन इनको माइंड सेट में था कि हम सर्कल के और अच्छे से मतलब कि वो करेंगे, खत्म करेंगे। इन्होंने अच्छा खेला तो गेम इन्होंने जीता। जब आपने तजमुल बाबा की विकेट मेरे ख्याल से खाली 10 रन पर हासिल की, लेकिन जिस तरीके से बोईमीर, सोहेल पॉल ने फिर इनिंग्स को पकड़ा, जो मोमेंटम उन्होंने लिया, मेरे ख्याल से वहीं पर गेम आपके लिए फिनिश हो गई। हाँ, ये मतलब कि बहुत बड़ी मतलब कि हमें वहाँ पे मूवमेंट मिला था, लेकिन हमने फिर उस मूवमेंट को हाथ में नहीं लिया। फिर जाके क्रेडिट जाता है बैट्समैनों को, उन्होंने अच्छा वहाँ पे मतलब कि खेल का मुजाहरा दिखाया, तो उन्होंने कंटिन्यू रन किए, तो लास्ट में ये बहुत इजी हुआ, तो इन्होंने जीता। इनके लिए कांग्रेचुलेशन। Tough luck and better luck for the future. Thank you, Captain of SAAHIL Electronics. That is Mr. Akib. Now, let's deal with the captain of MLA Gymkhana. That's none other than the Shan of District Badgam. That's Tajamal Baba. Big hands for Tajamal Baba. Tajamal, स्टार्ट किया आपने छक्के से और चौके से, लेकिन जिस तरीके से बोईमीर ने इसको खात्मा किया, मेरे ख्याल से इनिंग्स टू रिमेंबर, क्या कहेंगे? पहले ये कहना चाहता हूँ, जैसे इन्होंने टारगेट दिया था 238, हमने यही प्लान बनाया था कि पावर प्ले जो 6 ओवर है उसमें हम 100 तक स्कोर करें। इसलिए जब मैं पहले गया था, मेरा टारगेट था 100 तक करना 6 ओवर्स में। मैं फिर जल्दी आउट हो गया। फिर जब बशारत आई तो इसने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया, और इसके साथ सोहेल पाल ने। तो जब इन्होंने स्टार्ट दिया 6 ओवर्स में 109 के 14 था, इससे हमारी टीम को और बूस्ट मिला, वो हमें फिर इजी लगा। आपको लगता है कि ये जो आपकी चेज है, मेमोरेबल चेज, और प्लस मेरे ख्याल से एज तक याद रहेगी? पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे नहीं लगता ये छोटा ग्राउंड नहीं है, इस ग्राउंड में इतना बड़ा चेज करना ये तो यादगार ही रहेगा। And you have a party to go on? Yes. Thank you. The captain, and congratulations to MLA captain, that is Tajamal Baba. And now we have got the man of the match, that is Fashion Fiesta man of the match. I would like to request Mr. Mudassir Yaqub Saab, executive editor ANN News, please come to the front and he will present the Fashion Fiesta man of the match. और मेरे ख्याल से ये बड़ी मुश्किल बात है यहाँ पर सिलेक्शन करना। None other than Mr. Bashara, that is Boy Meal for you. Big hands for Boy Meal.
is receiving his Fashion Fiesta Man of the Match from Mudassir Yaqub Saab, Executive Editor ANN News. Thank you. मीर आपसे बात जरूर होगी। एक अहम सवाल आपसे, ये जो आपका बल्ला था ये लकड़ी का था या लोहे का था, प्लीज कुछ बताइए। लकड़ी का ही था। सच में? हाँ, सच में। लेकिन जिस तरीके से छक्के लग रहे थे ऐसा नहीं लग रहा था कि लकड़ी का था। वैसे बॉल भी यहाँ पे बहुत अच्छी है, बॉल जब अच्छी होती है तो शॉट भी अच्छे निकलते हैं। अच्छा, मुझे बोलिए कि क्या खाकर आए थे, यानी ऐसा लग रहा था हाईलाइट चल रही है, मैच तो लग ही नहीं रहा था चल रहा था। नहीं, खाकर तो वही आज जो रोज खाते हैं नॉर्मली। चलिए अच्छी बात है। लेट्स टॉक अबाउट द चेज। जैसे अपनी चेज को स्टार्ट किया, हालांकि तजम्मुल की विकेट जल्दी गिरी, लेकिन जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर था, मार्वलस, क्या कहेंगे इसके बारे में? टारगेट तो पहले ही बहुत बड़ा था, छोटा टारगेट नहीं था। फिर भी जब तजम्मुल ने अच्छा स्टार्ट किया, पहले ओवर में उसकी विकेट हो गई, प्रेशर थोड़ा सा आ गया क्योंकि टारगेट भी बड़ा था। हम ये उतरे थे इसी मकसद से कि स्कोर करना ही खेलना ही खेलना है, चाहे विकेट गिरे क्या करे तो खेलना ही खेलना है। तो चेज बहुत ज्यादा। जब आप पहले बॉलिंग कर रहे थे आपको भी काफी मार पड़ी, मेरे ख्याल से दिमाग में कहीं चल रहा था कि नहीं हम भी बख्शने वाले नहीं है, क्या ऐसी स्ट्रेटजी थी? नहीं, ऐसा तो नहीं था क्योंकि उन्होंने भी अच्छा खेला, फिर हमने भी जब खेला अच्छा तो विकेट भी बहुत अच्छी थी, तो इसलिए चेज भी अच्छे। चलिए, कंग्रेचुलेशंस फॉर मैन ऑफ द मैच। बशारत मिस्टर बोईमीर, मैन ऑफ द मैच फॉर MLA Gymkhana, who scored 106 runs of around 35 balls. And that's all what we have from the post-match presentation. Hope you have enjoyed it. We'll be back tomorrow for the match number 11. Till then, you enjoy your time. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. साले आपकी उम्मीदों पर खरा उतरना